Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of Daily News Analysis. So कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. And as you know that why newspaper is very important and for your exam perspective and in general you should know about that what is happening around us. Okay. So in newspaper analysis, what exactly we discuss? We discuss about all the important aspect of the newspaper. We discuss about the national news, international news, sports-based news, science and tech, summits and conference and miscellaneous. So this is very important to understand about the importance of newspaper. You must aware about that what is happening around us. Second thing that it will improve your vocabulary. And the third thing is that it would be that it makes you aware and it will help you out to solving the MCQ that would be based on current affairs. So, chalo. So, apart from that, we also discuss about the Supreme Court verdict, any amendments, any bill, which is very important, especially for the law entrance exam, CLAT is concerned, AILET is concerned. Here is a quote, let us remember, one book, one pen, one child and one teacher that can change the world. And उसके बाद हम discuss करेंगे questions of the day. Questions of the day, which means we'll ask you the 5 questions. The purpose is to ask the question is that how you would be able to solve and how you will see that the questions has been framed on the basis of the newspaper article. And quick tips. Quick tips क्या है? Quick tips का basically मतलब है कि आपको बहुत easily, जैसे with the help of mnemonics or any formula, that you will learn the techniques to learn the any things in the GK. जनरल नॉलेज में. चलो जी, पहला आपके सामने है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में. द क्लियर मैसेज इन द कोर्ट, नो टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सो द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन February 15th 2024 को ये जजमेंट आया, स्ट्राइकिंग डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. इट्स अ लैंडमार्क मोमेंट because the democracy requires transparency. And fact is that the electoral bond scheme was opaque. So voters in India have no idea who has been funding political parties and the amounts given in all leading democracy. Transparency is the basis of campaign funding. The court has restored that transparency. So इसमें क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, इस आर्टिकल में ऑलरेडी मेंशन है. देखो there are some other legal issues also. The first is the limit of funding by a corporate house or organization. Again, the world over is amounted limited to prevent undue influence on the government. So, electoral bond जो है, my friends, also remove the earlier limits on how much of its profit a company could donate to political parties. And the scheme even allowed Election Commission of India ने ये चीज़ बताई कि this opens up the possibilities of shell companies being set up for the sole purpose of making donations of political parties, and this too has been reversed by the court. So democracy went through a phase of chronic capitalism, जहाँ पे क्या होता है कि जो big money funded political parties in return laws, policies, schemes and incentives that were made for the benefit of the donors. तो इसमें क्या हुआ, there was an amendment to the finance bill. In any country, the central bank alone has the authority to issue currency such as notes हो गए, government bonds हो गए. Section 31 कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि only the RBI or the central bank authorized by the RBI Act shall draw, accept, make or issues any bill of exchange of promissory note for payment of money to the bearers of the note of bond. So government ने यहाँ amend किया RBI Act को using a finance act allowed under a new clause 31 clause 3. Central government to authorize to any scheduled bank to issue electoral bonds. This amendment to finance act has to be struck down. अब यहाँ पे समझो, जो पहली चीज़ तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक वोटर्स को राइट होनी चाहिए अपनी चीज़ों के बारे में जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी चीज़ फंडिंग मिल रही है. And the legal systems remains opaque to the so-called ordinary citizen and voter. So when 4 laws are amended to introduce a scheme that strike at the root of democracy, namely transparency, pehla, the first thing. Second one in that lawyers of like obfuscations that are drawn
over the scheme so that the citizens gives up trying to understand it. But these are not technical issues. These are issues that affect the very basis of democracy. तो क्या था जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था, इट कैन बी समराइज एज फॉलो: द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम हैज बीन स्ट्रक डाउन ऑल अमेंडमेंट्स ऑफ आरपी एक्ट. अब ये क्या होता है माय फ्रेंड्स? आरपी क्या होता है? आरपी होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. फाइनेंस एक्ट 2017 and the Company Act 2013 are violative of Article 19 and 14 of the Constitution. 19th क्या है my friends? Refers to the right to information. Article 14 क्या है? Right to equality. So the articles are a part of fundamental rights in the Indian Constitution and cannot be violated. सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न था. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की अथॉरिटी थी, ठीक है, आप उनको इन कैश एसबीआई में ही करवा सकते थे. सो एसबीआई इज द सोल बैंक रिसीविंग फंड्स इन एक्सचेंज फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू स्टॉप इशूइंग देम. देखो, मुद्दे को हम थोड़ी सी वो पार्टी वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से हमें डिस्कस करनी चाहिए. और ऑब्वियस सी बात है डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि जो एग्ज़ाम है आपके पास वहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, राइट. सो एसबीआई के पास, फिर से चलते हैं पुरानी कहानी की तरफ जहाँ बात कर रहे थे, एसबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो इन कैश करवाने की, राइट. So SBI has to submit the full details of all electoral bonds that have been issued so far. So the Election Commission of India (ECI) by March 6, 2024, in turn the Election Commission of India has to publish this information on its website within 2 weeks. So the issue of money in elections, which include the use of black money and bribing of voters, that using campaign funds and freebies remains. तो इससे क्या हो रहा है? इट इज सेड दैट द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी इज इटर्नल विजिलेंस. एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अ रिमाइंडर दैट सिटीजन नीड टू बी एवर वॉचफुल इन अ डेमोक्रेसी. और इस डेमोक्रेसी में क्या चीज़ें चल रही है ये जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, यहाँ पे कंसर्न क्या था? ट्रांसपेरेंसी एज अ डोनर रिमेन्स अनडिस्क्लोज्ड. अब ये जानने की कोशिश करो कि आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गवर्नमेंट ने, और इसमें 4 अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है. और ये जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड था, इट वाज इंट्रोड्यूस समवेयर इन 2017. सो द अमेंडमेंट्स टू द कंपनीज एक्ट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अमेंडमेंट्स मेड टू द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन एंड सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आर डिक्लेयर टू बी अल्ट्रा वायर्स. अब एक चीज़ समझो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में. इसको इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस बिल 2017 के साथ and notified in January 2018. Only SBI के पास थी ये चीज़ें कि the issue the bonds in denomination of Rs 1,000 and 10,000 and 1 lakh and 10 lakhs and 1 crore in the months of January, April, July and October. So the name of the donor is kept जो है confidential. Make sure इसकी validity होती है only 15 calendar days. 15 calendar days from the date of issues. मतलब XYZ कंपनी ने सपोज करो बीजेपी को फंड करा 10 लाख रुपये, तो ये 10 लाख रुपये को इन कैश करवाने को बीजेपी को अथॉरिटी होती है 15 कैलेंडर डेज में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से ही आप उसको इन कैश करवा सकते हो. सो ओनली पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 and which secured not less than 1% of votes polled in the last general elections to the House of People or the Legislative Assembly of the state are eligible to रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स. नॉट लेस देन 1%. एटलीस्ट या तो स्टेट के इलेक्शंस में या तो आपको लोकसभा इलेक्शन में आपकी एटलीस्ट 1% सीट्स आपके पास होनी चाहिए. तो आप क्या जानने की कोशिश करेंगे किस पार्टी को कितना फंड मिला था, और ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन की है. ये लो आपके सामने है, देखो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो आया इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टी को 2017-18 से 2022-23 में 11,450 करोड़ रुपीज़ आए फंडिंग में. सबसे ज़्यादा फंड इसमें से अलोन 55% जो फंड्स हैं वो अलोन है हमारे किसके हैं? बीजेपी के हैं. 55% फंड्स आर फ्रॉम द बीजेपी. सो बीजेपी बैक्ड ओवर 55% फंड्स. लुक एट हु गॉट हाउ मच. इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1,123. टीएमसी थर्ड पोजीशन पे है. बिरजू जनता दल बीजेडी जो आप नवीन पटनायक की जी की गवर्नमेंट है, उनको क्या मिला? उनको मिला 774. एंड डीएमके जो है हमारे, उनको क्या मिला? यहाँ पे उनको मिला 670.
और आम आदमी पार्टी 94 करोड़, एनसीपी 64 एंड जेडीयू 24। सो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको इतनी फंड मिली। बाकी बीआरएस, टीडीपी, शिवसेना, इन सबको भी फंडिंग दी गई यहाँ पे। बस मेजर पार्टी जो यहाँ पे हैं उनके बारे में हम डिस्कस किया हमने। बीजेपी को 6,566 करोड़ रुपीस मिले टोटल रेवेन्यू के, अलोन 55% फंड्स। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को इसलिए स्ट्राइक डाउन किया। अब दूसरी आर्टिकल आपके सामने है इसरो। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च की जिसका नाम रखा नॉटी बॉय। अब आप सोच लेंगे इतना फनी नेम क्यों है? देखो कुछ तो लॉजिक रखा होगा। इनका काम क्या होगा? इसका नाम है GSLV F-14 to lift off at 5:35 PM inside 3DDS to have a mission life of 10 years। तो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जो है, जो हमारे वेदर सैटेलाइट है, ये बेसिकली वेदर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हमारा जैसे वेदर प्रोडक्शन के लिए हमें हेल्प मिलेगी इससे। सो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनसेट 3DDS, इसका नाम है INSAT 3DS, दैट विल बी लॉन्च इनटू स्पेस ऑन बोर्ड GSLV। पहली चीज, जब आपके सामने है एक न्यू टर्म GSLV, तो क्या मतलब है GSLV का? विच इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, विच इज जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV। एक क्रूशियल मिशन है फॉर द रॉकेट, निकनेम्ड उनका रखा नॉटी बॉय फॉर इट्स स्पॉटी रिकॉर्ड। अब क्यों है ऐसा, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। सो GSLV जो है वो लॉन्च कहाँ से किया गया? अगेन सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, जहाँ से हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अगेन द लॉन्चिंग सेंटर वाज सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये कहाँ पे है माय फ्रेंड? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। सो ये यहाँ पे क्या यूज किया गया? ये 6th मिशन है ओवरऑल एंड 10th फाइट यूजिंग द इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन। अब आप सोचो क्रायोजेनिक क्या होता है? देखो बताता हूँ क्रायोजेनिक क्या होता है, पेशेंस रखो। अब यहाँ पे द मिशन सक्सेस विल बी क्रूशियल फॉर द GSLV विच इज शेड्यूल्ड टू कैरी लेटर दिस ईयर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार, विच इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय द नासा एंड इसरो। तो यहाँ पे इनसेट 3DS कितनी वेट है एंड ऑल, वो सारी इन्फॉर्मेशन बाद में जानेंगे। बट आपको देखना होगा कि ये जो इसमें इसका नाम नॉटी बॉय क्यों रखा गया। देखो, बट वाई नॉटी बॉय? ये आर्टिकल जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से। GSLV had flown 15 times before this and 4 of these had been unsuccessful, a very high failure rate for any rocket. So PSLV, the rocket that ISRO has used a maximum number of times, has failed only twice in its 60 launch. 60 टाइम लॉन्च किया PSLV को, बस 2 बारी वो क्या हुआ है हमारा, फेल हुआ है, इंक्लूडिंग द फर्स्ट टाइम इट वाज ट्राइड वे बैक इन 1993. So the LMV rocket had flown 7 times and never failed. GSLV की अगर बात करें, the most recent failure was in August 2021 when it attempting to carry Earth observation satellite EOS-3 into space. 5 minutes into the flight, it's deviated from the scheduled trajectory, lost the power to carry on and fell somewhere in the Andaman Sea. So it did have a successful launch after that in May last year, but the uncertainty over its performance and not dissipated completely. This is the reason why Saturday launch was watched more keenly for the rocket than satellite it was carrying. तो क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा टाइम क्या हुआ, अनसक्सेसफुल रहा, इसलिए इसका नाम रखा गया नॉटी बॉय। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैंने आपको बताया था क्रायोजेनिक के बारे में। प्रॉब्लम क्या है, इतनी बार फेल होते क्यों है? शॉर्ट में समझते हैं। जो GSLV है, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये एक मोर पावरफुल रॉकेट है देन PSLV के, and that can carry much heavier satellite. It can carry more than 2,200 kg to the geostationary orbit and over 6,000 to the low Earth orbit. ठीक है? So its problems have mainly been the cryogenic engine that powers the third and final stage of the flight. Cryogenic is science है एक that relating to the behavior of materials at very low temperatures. Cryogenic engines use liquid hydrogen as the main fuel.
So hydrogen, the most efficient rocket fuel, is very difficult to handle in its natural gaseous form but manageable in liquid state. However, it liquefies only at the very low temperature, nearly 255 degrees Celsius below zero. So the oxygen that is needed to burn this fuel also need to be in liquid form. और ऑक्सीजन जो है इज इन लिक्विड स्टेट एट अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. सो ये हमारा क्रायोजेनिक है. अब समझते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जो है हमारा एमएसपी फैलेसी. क्या है ये? देखो बार बार एक ही आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में. यहाँ पे इन शॉर्ट ये है कि जो डिस्पाइट पॉलिटिकल कंसेंसस with most party and unions supporting such a legal guarantee, successive government have deterred on legalizing this mechanism. So it is unfair to treat the cost of procuring rice and wheat as the cost of MSP program for rice and wheat. In fact, almost all of its subsidy of consumers and not to farmers, but then this is a commitment by the government under NFSA and it necessary irrespective of the MSP guarantee. So farmers are only getting the minimum value of their hard-earned produce and nothing more. So for the remaining crop, which is not a part of NFSA bundle, that procurement by the government is not a cost unless the government sells it with a subsidy. तो in short क्या है कि यहाँ पे क्या चीज़ें मेंशन की हुई है. So farmers are back on the street, unlike the last time when they marched to Delhi against the enactment of the 3 contentious farm laws. This time there is no immediate trigger. The demand of the farmers are manifold, but primarily they are asking for a legal guarantee for a minimum support price. So while this has been a long-standing demand, there has been a clarity on what it actually means. The lack of clarity has obviously led to the fear mongering with exaggerated claims about fiscal cost and monopolization of agricultural trade and missing markets. So this was similar जो NFSA Act में mention की गई. NFSA क्या है my friend? National Food Security Act. National Food Security Act. और उसमें फिर हमने यूज़ किया National Rural Employment Guarantee Act, नरेगा, MG नरेगा. So the reality is neither of these pieces of legislation are bankrupted. The government instead proved to be a lifeline for people during the pandemic. So MSP एक simple mechanism है to ensure the price stability of essential agriculture commodities, जिसमें 22 crops आती हैं उसमें. ठीक है. So जो guarantee MSP है may not be solve the farmers problem, but it offers a good opportunity to rectify the imbalance in the MSP and procurement system. So in many ways, the anger of farmers and the demand of reforms to the MSP system reflects years of neglect of the agrarian economy, which has been declining the incomes and real wages. तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को जाननी पड़ेगी जो इसमें आर्टिकल मेंशन है. अगेन आपके सामने है. अब और रील्स आप देखो और मोए मोए करो. ओपन एआई ब्रेक थ्रू सोरा. ये क्या है? हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट वीडियोस फ्रॉम अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट. ओपन एआई द क्रिएटर ऑफ रिवोल्यूशनरी चैटबॉट चैट जीपीटी. जीपीटी क्या है माय डियर फ्रेंड? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. थर्सडे को अनवील किया न्यू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन एआई मॉडल्स दैट कैन कन्वर्ट अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इनटू वीडियो. And the area of generative AI that was thus for a fraught with inconsistency. In model called Sora that can generate videos up to a minute long while maintaining visual quality and adhering to the user's prompt, OpenAI said. So Sora जो है is capable of creating complex scene with multiple characters, specific types of motions and accurate details of subject and background according to the OpenAI blog post. कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि the model can understand how objects exist in the physical world and accurately interpret prompts and generate compelling characters that express vibrant emotions. Why Sora is a big deal in AI development? Because while generation of images and text response to prompt and generative platforms have become significantly better over the past few years,
So in short, other companies too have ventured into text to video space. Google Luminary hai, which has announced last month that can create a 5-second videos on a given prompt, both text and image based. Other companies like Runway and Pika have also shown impressive text to video models their own. So is SODA available for users for everybody? Not yet. Company ने ये चीज़ बताई कि like it will take some safety steps and ahead of making SODA available in OpenAI products and will work with the teams. Domain expert ने भी इसके बारे में अभी डिस्कस की है. चलो जी, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, अब चलते हैं क्विक टिप्स के बारे में. क्या है क्विक टिप्स? इसमें है हाउ टू लर्न द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी. फ्रेज को लर्न करो. F stands for phrase, Russia, America, China and England. And official language of UN की क्या क्या है? Facers, which means French, Arabic, Chinese, English, Russian and Spanish. दिल्ली सल्तनत के किंग को लर्न करने के लिए क्या लर्न करना होता है? सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े. So S stands for slave, खिलजी, तुगलक, Sayyid, Lodi and Mughals. There are few students who asked about how to make notes on that. सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के मैंने आपको अपने नोट्स की समरी दी है. यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 368 विच इज प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 15 अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, 17 अनटचेबिलिटी, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 214 अबाउट द हाई कोर्ट, 51A अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, 343, 51 अबाउट हिंदी लैंग्वेज, एंड आर्टिकल 24 से चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट वर्क. 3 आर्टिकल इमरजेंसी से 52, 56 एंड 360. नेशनल इमरजेंसी 52, स्टेट इमरजेंसी 56 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360. इस टाइप से आप विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स यू कैन मेक नोट्स. अब आपके सामने क्वेश्चंस ऑफ द डे. चलो जी, पहला सवाल यूसीसी के बारे में. अभी उत्तराखंड में यूसीसी को इनैक्ट किया गया. उससे पहले गोवा बिकेम आवर फर्स्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड था. तो कौन सा आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द सुटेबल लेजिस्लेशन सोर्सेज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सही है. अब देखो सेकंड स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, आपको देख के वो सही लगा होगा. आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूसीसी फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो आर्टिकल 44 इज अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट but are supposed to inform and guide governance. Corruption Perception Index that is released by the, कौन रिलीज करता है इसे? Just see Transparency International. So India has been ranked 93rd out of 180 countries in the Corruption Perception Index 2023 according to Transparency International. So the CPI evaluates countries based on their perceived level of public sector corruption using a scale from 0 to 100. Third है आपके सामने. The Grammy Awards honor exceptional accomplishment in the field of what? Literature, sports, music and public service. ये है आपका म्यूजिक. अब देखो इस क्वेश्चन को. The labor force participation rate essentially tells what percentage of total population want to be a part of workforce. A low labor force participation rate means fewer people are making themselves available for economic activity. तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है. करेक्ट कौन सा है? बी ऑप्शन. Labor force participation जो है essentially tells us what percentage of people who are within the working age, which is 15 to 59 years group want to be a part of workforce. So low labor force participation rate undermines a country overall productivity and well-being because fewer people are making themselves available for economic activity. Demographic trap क्या होता है my friend? B option है. Combination of high fertility and declining mortality in developing countries resulting in a period of high population growth rate. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section, and make sure
If you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. We'll meet you tomorrow for the same time. Till then, bye-bye and take care. Make sure you need to share this video to a maximum number of your friends and your family members. They must be aware that what is happening around us. Thank you so much for joining with us. We'll meet you tomorrow. Till then, bye-bye and take care.